Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we were doing exercise 14.4. Okay, and today we are going to start with the next exercise, with the same exercise, that is 14.4. Okay, so in that we have done that how to calculate the area of the given figure or the shaded figure by using the square paper. So how we can calculate the area of the given shaded figure with the square on the square paper. So here a square paper is given and certain figures are drawn on it, as you can see in the exercise itself. Okay, so in this exercise 14.4 you can see the various figures are given. जैसे कि अभी मैं आपको दिखाया कि ये figures बनी हुई है, these figures are given and you have to find its area. अब आपको इसका क्या find out करना है? You have to find its area. Clear? So let's find out the area of these various figures as they are drawn here. Okay. So the C1, the A and the B we have already done. So now I'm going to start with the C part. Okay. So let me just write an exercise. That is exercise 14.4. So this is the exercise 14.4. Okay. So the figure is drawn here. So so let's draw the figure with the help of square boxes that which is drawn. I'm just drawing a square box here. तो देखिए बेटा, मैंने I have already told you so many times that you are not going to draw the lines. You are just going to use the square paper of maths that you were using in class 3. जो class 3 में आप square boxes वाली maths की copies use करते थे, आप उसी को use करते हो बेटा ये बनाएंगे. Clear? So I'm just using this. So here is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So I need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 के बाद 9, 10, 11, 12. Okay, so these are the boxes. Okay, and the lower one is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 9. Okay, so I'm just making. Okay, if you are not able to use the square paper, तो आप देखिए last option is you can make it also, but just make sure when you make these kinds of diagrams it should be clear and you must use the pencil and the scale for drawing these kinds of diagram. Clear? So the figure is like this. Okay, so I'm just drawing it here. So here they are including 1 and 2. Okay, 1 and 2. No, not this one. This is like this. थोड़ी सी complicated figure है बेटा. It will take time to draw it. Okay, so just draw it very clearly. So this is the figure that you can see in your books. Okay, that is given at part C. So this is the C part of exercise 14.4. So this is a kind of figure that you can see. Here it is like this, then it's moving like this, again like this and this. So I'm just making it again so that you can see it very clearly. So this is the figure that you can draw. Okay, it's better that you must use a square paper that we was using in class 3 to draw such figures. Okay, square paper लेके उसको paste करिए अपनी copy pages पे and let's just draw this figure. But just remember that I have already told you so many times that you must
काउंट द ईच एंड एवरी बॉक्स वेरी केयरफुली. तो हर बॉक्स को वेरी केयरफुली देख काउंट करते हुए ही आप सम करेंगे. क्लियर? सो now we have to find the area of this figure. Now what we have to do is we have to find this area of this figure which is drawn here. तो अभी जो फिगर हमारे पास यहाँ बनी हुई है इसका हमें क्या करना है? We have to find its area. Okay, so first of all, number of complete squares. टोटल कंप्लीट स्क्वेयर्स कितने हैं? अभी तक हमने पहले जो दो पार्ट्स किए थे वो छोटी छोटी फिगर्स थी. दिस इज द लार्ज वन एंड जस्ट रिमेंबर दैट काउंट वेरी प्रॉपरली. बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से काउंट करिएगा बेटा. ओनली देन योर सम विल बी करेक्ट. ओके, सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट फिगर्स, सॉरी कंप्लीट स्क्वेयर्स, नॉट फिगर्स. ओके, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जब हमने इक्वेशन किया था इन द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, द हेडिंग इज गिवन. Find the area of the shaded figure. If the area of each square is 1 square centimeter, find the area in the square centimeter. So we have to find the area in square centimeter. Okay, so this is 1 square is equal to 1 centimeter. 1 square is equal to 1 centimeter. So let's count the number of squares here. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then it's 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I'm just counting the complete squares only. Then it's 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. So the total number of complete squares are 38. So in this figure, the total number of complete squares covered by this figure is 28. So the number of complete square is 38. It's not 28, it's 38. So the number of complete square is 38. Okay, now next, number of half squares. So half squares कितने हैं? Let's count them. Okay, so that will be 1. I'm now for counting the half squares, I'm using Roman numeral. Okay, I'm using the digits in Roman numeral. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the number of half squares is 12. So the number of half squares is 12. तो देखिए, आप चाहें तो फॉर योर काउंटिंग द कंप्लीट स्क्वेयर्स यू कैन यूज numbers. Okay, and for counting the half squares you can use Roman numerals. That what I have done here. So finding so that I get इसको clear, आपको लिखने में easy रहेगा बेटा. You can count it easily and just make sure that you write all these numbers with the pencil only, as you are using pencil only actually. Not use color. Don't use colors for writing these such numbers. Clear? So the number of complete squares is 38. Number of half squares is 12. Now what we have to do is we have to find the area. हमें क्या निकालना है? इसका area. So we have to find the area of this. So how you can find the area of it? So for finding the area of this, you will add the total number of complete squares plus half of half squares. तो हमने area के लिए क्या करेंगे? We will add total number of complete squares and half of half squares. Half of half squares क्यों किया बेटा? Because these are half squares. Half and half make 1. Half and half make 1. So that means अगर ये 12 हैं तो total complete squares कितने हुए? 6. तो ये 12 half squares हैं. ये 12 half squares है, इसको हमें complete squares बनाना है. So that means हम half और half को add करेंगे, that will be 1. So the इसलिए हम जो complete squares plus half of half squares करते हैं. Okay, so that will be
complete square is 38 plus half, that is 1 upon 2 of half squares, that is 12. Okay, now let's add them all. 38 plus half of 12, that means 1 upon 2 of will change into sign of multiplication, that will be 12. Okay, now 38 plus 12 upon 2. 38 plus 12 upon 2. So 12 को 2 से divide करेंगे. So let's divide 12 with 2. You will get 6. I'll just show you somewhere. Okay. So let's divide 12 with 2. 2 6 are 12 minus. So the answer is 6. So that will be 38 plus 6. That will be 38 plus 6. This is the rough work. You can erase. I will erase it. So area 38 is the number of complete square plus half of half square, that is 6. So 38 plus 6 will be 44 square centimeter. 44 square centimeter. Clear? So this is the area. Area is equal to 44 square centimeter. So this is how we are going to calculate the area of any given figure. So first of all, you will calculate the total number of complete squares, that is 38. Then number of half squares, that is 12. Okay, and after that you will add both. But while adding, just keep in mind you will add half of half squares. जो half squares हैं, the total number of half squares हैं उनका half add करेंगे, because half and half make 1. So that's why we are adding half of half squares, that is 12. So half of 12 will be 6. Half of 12 will be 6. So that is 38 plus 6, that is 44. So that will be 44 square centimeter. Okay. So for that you can just pause your videos here and note it down in your notebooks. Clear? So this is the C part of question number of exercise 14.4. Okay. Now the rest D and E part here that you are going to do by yourself. Okay. So I'll just give you a few more examples like this, so that if you are having any kind of doubts, that will be clear. So I'm just giving you few more examples for this. So let's take few more examples regarding this. And the D and the E part, the figures is a little bit complicated. So just draw it very carefully, okay, and you will calculate it like this only. Clear class? Chaliye, now moving, let's do some of the examples for the same kind of questions. So I'm taking examples from the book only. That is an example number 1 in the book. Find the area of the shaded figure. Okay. So I'm taking some examples. Okay. Now I'm taking some of the examples here. Clear? So example number 1, A part. So the diagram is given here. So I will just make the diagram. So this is 3, 1, 2, 3, 4. Okay. So first of all, let's make the square paper. The square paper, I think अब आप सबको समझ में आ गया है. Then what is square paper? 1, 2, 3, 4, 5. This is 6. Okay, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is the A part of example number 1. Okay. Now you can see that figure is drawn like this. So here it is taken, I am highlighting it here. ये यहाँ पे ऐसे highlighted है बेटा. This is highlighted like this. Okay. And here it is taking 4. 1, 2, 3, 4, 4. And it is this figure में it has taken the 4. So when you draw this kind of diagram, just draw it very carefully. Okay, then just highlight it. You can use
for highlighting it you can use the pencil or you can use the colors as well, so that is not an issue. I am having the marker, black marker only, so that's why I am highlighting it with double lining. But you can use highlighter or you can use any color pen, okay, for highlighting the figure in the square box. Okay, don't use pencils to draw these kinds of figures, otherwise it will not be clear. So just use dark pencils or some colors for drawing such figure. Okay, so I am just drawing it like this. So this is the figure now. Okay, now we have to find the area of this figure. Now we are going to find the area of this figure. So let's find out. So देखिए, first of all we will write number of complete square. Number of complete squares. So let's count number of complete squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the number of complete square is 9. This is the total number of complete squares that you can see here. So this is the number of complete squares. Clear? Now number of half squares. So what is next? That number of half square. So can you see any kind of half square in this figure? आपको इसमें कोई half square नजर आ रहा है? No, there is no such half square in this figure. So that means इसमें सिर्फ क्या है? Complete squares हैं, इसमें कोई भी half squares नहीं है. So for that, now we are going to find the area. तो इसमें देखिए area में अब हमारे पास half squares कोई नहीं है. We are having only 9 complete squares. So that 9 square units. These are the 9 square units. ये हमारी 9 square units हैं. 1 square is equal to 1 centimeter. एक square कितने equal है? 1 square is equal to 1 centimeter. So that means 9 square units will be equal to 9 square centimeter. 9 square centimeter. तो देखिए हम क्या assume करते हैं? That not assume, actually it is given that each and every square in this box is of 1 centimeter. Okay, square centimeter. So 1 square is of 1 centimeter. Okay, and suppose अगर वहाँ पे 1 square is equal to 1 meter दिया होता तो आप इसको 1 meter ही लिखेंगे, 1 square meter. Okay, this square is always while finding the area. जब भी आपको area find out करने के लिए दिया जाए बच्चे, you have to write it like this. Only square is must when you find the area of anything. Okay, so 9 square units is here. Now the area is 9 square centimeter. So the area is 9 square centimeter. Okay, so you can write the separately you can write the area. Area is equal to 9 square centimeter. Area is equal to 9 square centimeter. So this is how you are going to find the area. ऐसे आप क्या करेंगे? आप एरिया फाइंड आउट करेंगे किसी भी फिगर का दैट इज गिवन ऑन अ स्क्वायर पेपर. कोई भी फिगर अगर किसी भी तरह की कोई भी फिगर आपको मिलती है दैट इज ड्रॉन ऑन द स्क्वायर पेपर, अगर कोई भी फिगर स्क्वायर पेपर के ऊपर ड्रॉ की हुई है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट्स एरिया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स दैट इज 9 इसमें है, बट देर इज नो हाफ स्क्वायर इन दिस. इसमें कोई भी हाफ स्क्वायर्स नहीं है. होते तो हम उन दोनों को ऐड करते and after that you will find the area, but here in this figure there is no half square in this figure, so that's why we are going to write it like this only. So number of complete square is 9. Area is equal कितना होगा? That will be 9 square units. So 9 square के units लिए है ना इसने. Units means एक square को हम बोल रहे हैं, तो 9 square shape के 9 units लिए हैं. So that means 1 square is equal to 1 centimeter. तो 9 square units कितने equal होंगे? That will be 9 square centimeter, and this is the area as well. So the area is equal to 9 square centimeter. Okay, so I hope now the concept of finding the area using the square paper is clear to you all. Okay, now let's begin with the next topic, that is symmetry. Okay, so now we are going to learn another topic of the geometry, that is symmetry. So now I'm going to discuss some of the topics of symmetry with you all. Okay, now let me just erase it. So now we are going to start with symmetry.
Okay, so now the next topic is symmetry, that is SYMMETRY, that is symmetry. So now we are going to start with symmetry. Okay, so what is symmetry? This is a mathematical term. Okay, so what is symmetry? Let's find out. Okay, so let's read from the page number 168 that is given in your book. Okay, first of all, let's read some of the lines about symmetry, and then I'll explain you with the examples, the various examples. Okay, so in our surroundings we find many figures and objects which can be folded along a straight line in such a way that they are divided equally into two halves. Look at the following letters and the figures. Okay, so this is the figures that they have given. So what is the symmetry? Symmetry means mirror image. If you want to know what is symmetry, just look at the mirror. सामने अपने एक मिरर रखिए. Okay, like this, like I'm watching this video, I'm just making this video right now. So I can see my symmetrical image in this in my phone. अभी मुझे अपने फ़ोन में अपनी सिमेट्रिकल इमेज जो है दिख रही है कि दैट जो मैं यहाँ कर रही हूँ, जैसी मैं यहाँ दिख रही हूँ वैसी मैं वहाँ दिख रही हूँ. सो दिस इज सिमेट्री. सो सिमेट्री मीन्स द मिरर इमेज. ओके, सिमेट्री मीन्स द मिरर इमेज कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप उसको एक 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, बट आफ्टर डिवीजन दैट लुक्स जस्ट अलाइक ईच अदर. वो दोनों एक जैसे नहीं, बिल्कुल आसपास एक बिल्कुल एक सेम जैसे दिखते हैं. दैट इज नोन एज सिमेट्री. सो हियर, so we are going to discuss about some of the topics of symmetry. So now I am going to discuss the topics related to symmetry. So symmetry, according to the mathematical term, the symmetry is the mirror image of anything. कोई भी चीज़ हो उसकी मिरर इमेज. ठीक है, अगर हम उसको कोई सी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो एक दूसरे से दिखे. जैसे आई एम हैविंग दिस डस्टर. अगर मैं इस डस्टर को यहाँ से आधा तोड़ दूँ, इफ आई ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स, तो क्या दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे? यस, दोनों के दोनों हाफ में ये भी एक जैसा, ये भी दोनों एक जैसे नजर आएंगे. नाउ आई एम हैविंग दिस मार्कर. ओके, सो नाउ आई एम हैविंग दिस मार्कर हियर. ओके, सो दिस इज द मार्कर दैट आई एम शोइंग यू हियर. सो अगर इस मार्कर को मैं इफ आई जस्ट ब्रोक दिस मार्कर इनटू लाइक दिस, अगर मैं इसको इस बीच में से तोड़ देती हूँ, काट देती हूँ, तो क्या दोनों इमेजेस सेम होंगी? नो. देखिए यहाँ पे ब्लैक कैप है, इधर से ये पतला है, इधर से ये थोड़ा मोटा है. सो इट विल बी सिमेट्रिकल इमेज? नो. बट अगेन अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से कट करती हूँ, इफ आई कट दिस मार्कर इनटू द 2 पीसेस फ्रॉम हियर, सो विल इट बी अ सिमेट्रिकल इमेज? क्या ये सिमेट्रिकल इमेज होगी? यस, देन इट विल बी द सिमेट्रिकल इमेज. क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको जब हाफ पार्ट में डिवाइड किया इधर से और इधर से, तो दोनों के, ठीक है, नाउ इंक्लूडिंग दिस कैप, अगर मैं इसको बीच में से इसके कैप में से रिमूव करते हुए निकालती हूँ, तो दोनों की अलग अलग इमेज होगी, अलग अलग हो जाएंगे, बट दोनों एक जैसे दिखेंगे. दोनों में ऊपर पॉइंट है, देन ये है, देन ये है, देन ऑल दिस है. सो दैट मीन्स दिस इज सो इफ आई एम ब्रेकिंग दिस मार्कर इन लाइक दिस, आई एम कटिंग दिस मार्कर लाइक दिस, सो इट विल नॉट बी अ सिमेट्रिकल इमेज. बट इफ आई एम कटिंग दिस मार्कर लाइक दिस, ऐसे बीच में से काटती हूँ, दैट विल बी सिमेट्रिकल इमेज. सो सिमेट्री इज कटिंग समथिंग इंटू, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनको हम अगर 2 पार्ट्स में काटेंगे, so that they will look equal both, but both the sides, both the things will equal just identical to each other. दोनों की दोनों identical होंगी. Okay, so जैसे अभी मैं now I'm just facing my legs this, so can you see that both the sides of my this face are equal? Yes, I'm having an eye here and here also, nose this side and nose this side. So this is the symmetrical image. Half portion of my face is the symmetrical. Okay, so this is symmetry. तो अभी हम now in this we are going to discuss about some of the symmetrical images. Okay, then it will be clear to you all. So I'm just drawing some of the figures here, and then I'll tell you that what is symmetry. So here I'm just drawing, let's see the simple one, that is O. अभी मैंने O लिया. Okay, I have just made a circle. O ले लीजिए, circle बोल लीजिए. So if I divide this figure, अगर मैं इस फिगर को ऐसे डिवाइड कर दूंगी, मगर इसको बीच में से ऐसे काट दूंगी सर्कल को, तो क्या ये दोनों बिल्कुल सेम नजर आएंगे? यस. ओके, एंड इफ आई कट दिस फिगर लाइक दिस, सो विल दे लुक इक्वल? क्या ये दोनों जैसे नजर आएंगे? विल इट लुक? यस, डेफिनेटली इट विल लुक लाइक दिस. सो दीज आर द सिमेट्रिकल इमेजेस ऑफ दिस फिगर. सो दीज आर द सिमेट्रिकल इमेजेस ऑफ द फिगर. सो इफ यू डिवाइड any figure, anything into 2 halves, and they
are looking just like each other, they are just looking similar to each other, they are just identical to each other. Okay, so दोनों जो से दिखते हैं after dividing into two parts, so that is a symmetry, so that is known as symmetry. और इस जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको सिमेट्री लाइन बोलते हैं. ओके, सो दिस इज नॉन अ मिरर लाइन या सिमेट्री लाइन बोल लीजिए आप. ओके, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको हम बोल देंगे लाइन ऑफ सिमेट्री. सो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री. जस्ट कीप इन योर माइंड दैट दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. क्लियर? लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. ओके, now I'm drawing this one, D. So D. So now I'm dividing this figure like this. Now I'm dividing it like this. अब मैं इसको ऐसे काटूंगी तो क्या ये दोनों एक जैसे नजर आएंगे? दिस एंड दिस पार्ट. अगर इसको बीच में से मैं ऐसे काट देती हूँ तो क्या ये दोनों एक जैसे नजर आएगा? Yes, definitely it will look alike. अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसे काट दिया तो genuinely it will look alike. Okay, but suppose in spite of cutting it like this, मैंने इसको इस ऐसे डिवाइड किया टू पार्ट्स में. आई हैव डिवाइडेड दिस फिगर इनटू दिस लाइक दिस इनटू टू पार्ट्स. तो क्या जब मैंने इन दोनों को बीच में से कट किया यहाँ से, एंड दीज टू फिगर्स विल दे लुक इक्वल? आर दे अलाइक? नो, डेफिनेटली नॉट. सो नाउ दे आर नॉट लुक अलाइक. अभी दोनों एक जैसे नजर नहीं आ रहे. अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो अपर एंड द लोअर बॉटम पार्ट दे विल लुक अलाइक. बट इफ आई कट इट फ्रॉम लाइक दिस इट विल नॉट लुक अलाइक. एक दूसरे जैसे नजर बिल्कुल नहीं आएगी. सो दिस इज हाउ. तो किसी भी इमेज को इस तरह से काटना, किसी भी चीज की जो कटिंग है या उसको इस पार्ट इस तरह से डिवाइड करना, दैट बोथ द पार्ट्स दे लुक इक्वल, दैट इज नोन एज सिमेट्री. इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सिमेट्री. ओके, सो लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द सिमेट्री. So an exercise is given in your book regarding the symmetrical images. Okay, बहुत सारे symmetrical images बनी हैं. So I'll just make few. I've just write. मैं कुछ यहाँ पे alphabetical orders लिखती हूँ and just notice that can we divide that in alphabetical letters into the symmetry with the line of symmetry? Can we divide this alphabetical letters with this line of symmetry? So just look and pay attention to it. Okay, so first of all I'm just writing it like this. So this is what this is n. You can see n here. So if I'm dividing it like this, क्या मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूंगी? अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ, so will the क्या ये दोनों पार्ट एक जैसे नजर आएंगे? No, definitely not. देखिए इसका ये ऊपर है, ये इसका ये नीचे है. So this will they look equal? Sorry, will they look alike? No, they will not look alike at all. Okay. So is it a symmetrical image of it? No. Let's take one more example. I'm taking the P. Okay. अगर मैंने P को ऐसे डिवाइड किया, so am I drawing a symmetrical? Am I drawing a symmetrical image of P? No, it is not a symmetrical. Okay. Now I have changed. क्या मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया? मैंने divided it like this. So are these two parts are symmetrical to each other? No. So they are not symmetrical. So symmetrical means the images that you are drawing, that they look alike. That you are the things that you are dividing, they look बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं. हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा स्कूल में भी हमारे बहुत सारे आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं कि टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन है. जैसे यू आर हैविंग आयुष एंड पीयूष इन योर क्लास. आई एम गिविंग योर एग्जांपल्स आयुष एंड पीयूष. So they just look identical. Sometimes I got confused that who is Ayush and who is Piyush. So these are the identical twins. So वैसे ही the images should be like this, that you just got confused कि कौन सी इधर है, मतलब दोनों एक जैसे दिखने वाले. So that is symmetry. Okay. So now take few examples of symmetry. Now तो देखिए कुछ फिगर्स हैं जिसको आप कहीं से भी काटिए, they will look just like that. Okay. So now I'm just taking an example of again a circle. अगर आप सर्कल को वर्टिकली काटते हो, हॉरिजॉन्टली काटिए, कर्व, आप इसको किसी भी तरह से काटिए, दैट विल बी स्विच. आप इसको ऐसे काटिए, ऐसे कट करिए, ऐसे कट करिए, ऐसे कट करिए, इट विल फॉर्म अ सिमेट्रिकल इमेज ओनली. ओके, अनदर एग्जांपल इज ऑफ अ स्क्वायर. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर. सो इफ यू कट अ स्क्वायर लाइक दिस, it will be a symmetrical image. Yes, if you cut us like this, it will also be a symmetrical image.
अगर आप इसको ऐसे काटते हैं, that will also be a symmetrical image, and if we cut like this, it will also be a symmetrical image. So there are certain figures that whether you cut it like any way, that will look just alike. उसको आप किसी भी तरह से काटिए, वो हर तरह से एक जैसी ही नजर आएंगी. Okay, I have given an example of circle and the square, the rectangle as well. Okay, so symmetrical figure may have more than one line of symmetry. जो सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया. सो दीज टू फिगर्स आर हैविंग मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री इनटू इट. इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. क्लियर? सो दिस वाज सिमेट्री. सो दिस वी वर डिस्कसिंग सिमेट्री. क्लियर? So with this, I'm just ending the session here at Only Class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.